Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Vidhi Kapoor, your trainer for financial reporting. And in today's video, we would be discussing about IAS 38 intangible assets. And this is going to be the part one of the video. Guys, if you are following along the FR series, please make sure to subscribe to my channel and I'll be coming up with more such helpful videos for you all. And in case you have any feedback for me, please make sure to drop it down in the comment section below and I'll make sure to answer it all and improvise the feedbacks in my upcoming session. So without any further ado, let's get started with the session. Okay, so the next accounting standard that we are starting now is intangible assets. और बेसिकली intangible assets आप लोगों के होते क्या है? वो assets जिनकी कोई भी physical existence नहीं होती. आज तक आप लोगों ने आई थिंक 5-6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कर लिया. उन सब में मैंने हमेशा बात करी है टैंजिबल एसेट्स की, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जिन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे. आज तक हमेशा इसी चीज के बारे में बात हुई है. नाउ वी आर जस्ट चेंजिंग थिंग्स अ लिटिल बिट एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स कि ऐसे भी एसेट्स हो सकते हैं जो मुझे बेनिफिट दे रहे हैं बट दोज डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस. यानी कि कंपनी की गुडविल है मान लो, या कंपनी का ब्रांड नेम है, उसकी वजह से आपको वो पैसा तो कमा के देगा, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट तो दे रहा है, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट सी इट, यू कैन नॉट टच इट. उसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकल प्रेजेंस है ही नहीं, राइट? तो वो सारे एसेट्स आपके किसके अंदर कंसिडर करे जाएंगे? IAS 38 के अंदर. और यही अगर मेरे पास कोई एसेट हो जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो IAS 16 में PPE के अंदर रिकॉग्नाइज करते थे. ठीक है, तो अब इसके अंदर IAS 38 के अंदर रिकॉग्नाइज करने के लिए 3 कंडीशंस मीट होनी चाहिए. पहली, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, कोई मॉनेटरी एसेट नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नॉन मॉनेटरी एसेट है. मॉनेटरी एसेट का मतलब क्या होता है? बेसिकली वो एसेट जिसके बदले मुझे पैसा मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल रिसीवेबल्स है मेरे, तो ट्रेड रिसीवेबल्स वो कॉन्ट्रैक्ट ही है, जहां पर आपके पास एक राइट है कि आप अपने कस्टमर से फ्यूचर में पैसा रिसीव करोगे. तो उस टाइप का कोई एसेट नहीं होना चाहिए. एंड तीसरी चीज, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो सेपरेटली कि वो एक पर्टिकुलर एसेट है जिसको आप बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जिसके बदले आपको इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है. ओनली देन यू कैन से कि ठीक है, ये एसेट दिख तो नहीं रहा बट मुझे बेनिफिट प्रोवाइड कर. नेक्स्ट चीज आती है कि अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास इंटेंजिबल एसेट है, तो अब ये दिखता तो है नहीं, टच तो कर नहीं सकते, हमें उसके बारे में कुछ पता तो है नहीं, तो अब इसको हम लोग दो उसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं. पहली चीज होती है कोई ऐसा एसेट जिसके लिए मैंने पे करा, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज. परचेज का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक AC परचेज करा, तो AC परचेज करने के बदले मैंने कुछ ना कुछ पैसा दिया होगा, करेक्ट? तो AC लेट्स से मैंने AC परचेज करा 30,000. ठीक है, तो जो मैंने 30,000 पे करे उतने का मेरा एसेट है, राइट? इजी था रिकॉर्ड करना. तो इनटैंजिबल एसेट के अंदर भी सिमिलरली अगर आपने परचेज करा है, लेट्स से आप लोगों ने कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया, ठीक है, तो हम लोग गुडविल वगैरह कैलकुलेट करते थे, तो आपने बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ पैसा तो दिया होगा ना खरीदने के लिए. या फिर आपने लेट्स से डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले ली, तो अब आप फ्रेंचाइजी फीस तो पे करोगे ना उनका ब्रांड नेम खरीदने के लिए. तो जब आप कुछ पैसा पे कर रहे हो, आपकी पॉकेट से कुछ पैसा बाहर जा रहा है, तो हम लोग उस केस में क्या कर सकते हैं? उसको एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने बुक्स के अंदर. ठीक है, तो IAS 38 क्या कहता है? इफ यू आर पेइंग टू परचेज दैट एसेट, आपने कुछ भी परचेज कंसिडरेशन दी है, तो आप अपने एसेट को उस प्राइस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो अब परचेज का मतलब ये है कि आपने प्राइस पे करा उस चीज को खरीदने के लिए, तो जिस प्राइस पे आप उसको परचेज कर रहे हो उस प्राइस पे यू आर अलाउड टू रिकॉर्ड इट एज एन इंटेंजिबल एसेट. ठीक है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट जैसे हमारे विद टाइम टैंजिबल एसेट जो थे डेप्रिशिएट होते थे बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टेयर, सिमिलरली हमारे इनटैंजिबल एसेट की भी विद टाइम वैल्यू कम होती है, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन की जगह बस नाम चेंज करके क्या बोल देते हैं? अमोर्टाइजेशन. ठीक है, तो अगर मेरे पास परचेज है तो आपको पता होगा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है हमारे एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए. पहली चीज, हमें फ्यूचर में बेनिफिट देना चाहिए. दूसरी चीज, उसकी कॉस्ट हम लोग आराम से मतलब रिलायबली मेजर कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि कोई अनसर्टेनिटी नहीं है. वी कैन एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, तो उस अमाउंट पे हम लोग एसेट को रिकॉर्ड कर लें. ठीक है, तो आई विल रिपीट इट अगेन. इंटैंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती.
और हम इसको किस प्राइस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? वी विल सिंपली रिकॉर्ड इट। अगर मैंने परचेज करा है तो जितने का परचेज करा उतने पे रिकॉर्ड करो और विद टाइम उसको अमोर्टाइज करते हैं। ठीक है, सेम तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी सेम तरीका रहता है, यहाँ पर कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि यार मैंने सोचा यार इंटेंजिबल एसेट मैं क्यों ना खुद बनाऊं, तो उस केस में हम लोग उसको सेल्फ जनरेटेड या इंटरनली जनरेटेड बोलते हैं। अगर मान लो आप लोगों को मैं बोलूं कि यार अपना एफआर का पेपर खुद चेक करो, तो डू यू थिंक इफ एनीवन आउट ऑफ यू इज गोइंग टू फेल द पेपर? इवन इफ आप अपने आपको टॉप ना मरवाओ, रैंक ना दो, लेकिन एटलीस्ट कोई फेल तो नहीं होगा, ये आई कैन गारंटी। अग्रीड? तो यानी कि अगर हम अपनी खुद की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? हमेशा खुद को ओवर एस्टिमेट करेंगे, राइट? तो सेल्फ जनरेटेड और इंटरनली जनरेटेड का मतलब भी यही है कि मैंने अपना एसेट खुद बनाया और मैं उसको खुद से वैल्यू करूंगी, तो मैं उसको ज्यादा प्राइस पे दिखाऊंगी। और अगर मैंने उसको ज्यादा प्राइस पे दिखाया तो काइंड ऑफ आई कैन कॉल इट कि हम लोग क्या कर रहे हैं? विंडो ड्रेस कर रहे हैं अकाउंट्स को, यानी कि अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? व्हेनेवर इट इज एन इंटरनली जनरेटेड, हम लोग उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। बिफोर वी गेट इनटू द थ्योरी, लेट्स से जब कोविड आया था तो क्या उसकी वैक्सीनेशन या सब चीज अवेलेबल थी? कुछ क्योर ही नहीं था अपने पास। तो उस टाइम पे क्या करा गया? पहली चीज, जितने भी डॉक्टर्स वगैरह थे उन्होंने रिसर्च स्टार्ट करी विद रिगार्ड टू द वायरस, कि भाई किस टाइप का वायरस है, इसको कैसे क्योर करा जा सकता है, ये सारी चीजें करी होंगी। तो जब उन्होंने उसकी सारी रिसर्च करी, तब भी क्या डॉक्टर्स का कुछ खर्चा हुआ होगा क्या? मेडिकल टीम का या फिर डब्ल्यूएचओ का या फिर ये सारी चीजें? हाँ, गवर्नमेंट का भी पैसा तो लग रहा है ना उस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज दैट कम्स अंडर इंटरनली जनरेटेड, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब आई वुड से मैंने सोचा आज एसेट बनाने का तो कल एसेट बन गया, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। पहले हम लोग क्या करेंगे? उसके बारे में रिसर्च करेंगे, हम लोग उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे दैट वेदर इट इज पॉसिबल फॉर अस टू मेक इट और नॉट। तो रिसर्च स्टेज में भी आपका यानी कि खर्चा तो हो रहा है। तो जो कोविड का एग्जांपल मैंने लिया, तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ? पहले हम लोगों ने क्या करा? उसके बारे में रिसर्च करा, सारी चीजें करी। उसके बाद आपको खुद पता है ऑल ओवर द ग्लोब सबने रिसर्च करी और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर वैक्सीन आई है मार्केट में, राइट? कौन कौन सी आई थिंक कोविशील्ड आ गई थी, कोवैक्सिन आ गई थी, उसके अलावा आई थिंक देयर वर वन टू मोर, बट मेजरली कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन इंडिया में चल रही थी, राइट? तो ये वैक्सीनेशन हमारी कब आई हैं? आफ्टर सो मेनी टेस्टिंग, आफ्टर सो मेनी रिसर्च, आफ्टर सो मेनी थिंग्स, उसके बाद वो मार्केट में आई एंड लाइक इट वॉज अवेलेबल फॉर यूज, करेक्ट? तो अब इंटरनली जनरेटेड के अंदर भी हमारा जो पर्टिकुलर एसेट होगा वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। पहली स्टेज होती है रिसर्च फेज। रिसर्च फेज में मुझे कोई गारंटी नहीं है दैट वेदर आई विल बी एबल टू मेक दैट एसेट और नॉट। तो रिसर्च स्टेज में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इनिशियल प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं एट जस्ट, हमारा इंटेंशन ये होता है नॉलेज को एक्वायर करने का, ये देखने का कि वेदर इट इज फीजिबल फॉर मी, क्या वो चीज बन भी सकती है या नहीं बन सकती। लेट्स से मैंने बोला कि मैं कोविड क्या था, कोविड को लेकर आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ वैक्सीन, मुझे क्या पता मैं बना सकती हूँ नहीं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? रिसर्च स्टेज पे उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो उस टाइम पे जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा हमारा कहाँ पे चला जाएगा? वी आर सिंपली गोइंग टू एक्सपेंस इट आउट। वाई? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या ये एसेट अपना बन भी सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है, जब मुझे थोड़ी कुछ कंफर्मेशन मिल जाएगी, नॉलेज एक्वायर कर ली कि हाँ भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है बना, तो हम लोग एंटर करते हैं डेवलपमेंट स्टेज के अंदर। अब डेवलपमेंट स्टेज के अंदर भी हम लोग तब तक कैपिटलाइज नहीं करेंगे। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? एसेट की तरह रिकॉर्ड करना। तब तक एसेट की तरह रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक ये पायरेट क्राइटेरिया अपना मीट नहीं हो जाता। अगर ये क्राइटेरिया मीट हो गया तो कर लेंगे एसेट की तरह रिकॉर्ड, अगर पायरेट क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो आप नहीं करोगे। ठीक है, तो अब बात आती है व्हाट इज दिस पायरेट क्राइटेरिया व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। हियर P stands for probable chance of economic benefit. Probable chance of economic benefit का मतलब क्या है अपना? Probable chance of economic benefit का मतलब ये है कि मेरे को 50% से ज्यादा चांसेस है कि मेरे को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा once I prepare this. For example, जब Instagram बना होगा, ठीक है, तो है तो वो भी सॉफ्टवेयर ही,
ठीक है तो वो भी इंटेंजिबल एसेट ही है, तो वो भी पैसा कमाने का एक तरीका ही, करेक्ट। तो अब जब इंस्टाग्राम के बारे में लेट्स से इनिशियल स्टेज पे, अब इंस्टा बहुत ज्यादा टाइम तो आई डोंट थिंक हुआ है, 5-10 ईयर्स हुए होंगे शायद से, तो 15 ईयर्स बैक भी अगर आया तो उस टाइम पे पहले इनिशियली क्या करते होंगे, उसके बारे में रिसर्च वगैरह वो सब चीज चली होगी। देन उसके बाद उन्होंने देखा होगा कि ठीक है भाई, ऑनलाइन प्रेजेंस इन फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, देयर आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंसर्स, देयर आर गोइंग टू बी कंटेंट क्रिएटर्स हु कैन कम इन एंड डिजिटल प्रेजेंस की वजह से बहुत ज्यादा वी कैन अर्न थ्रू द सेम। तो अब हमें अगर पता है कि मुझे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो पहला क्राइटेरिया तो वही मीट हो गया। दूसरी चीज है, अगर मैंने बोला सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाना बोलना वर्सेस एक्चुअल में बनाना, इम्प्लीमेंटेशन करने में जमीन आसमान का है। तो इफ यू हैव एन इंटेंशन टू कंप्लीट, इफ यू आर जेन्युइनली वर्किंग फॉर द सेम, ओनली देन यू कैन से दैट यस बॉस, सेकंड क्राइटेरिया अपना मीट हो। थर्ड चीज ये है रिसोर्सेज टू कंप्लीट। अब एक बात बताओ, मैं बोल रही हूँ कि यार मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, अब उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए 1 करोड़ लगेगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो डू यू थिंक विल आई बी एबल टू क्रिएट दैट एसेट, या मैं उस एसेट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकती हूँ जस्ट ऑन द बेसिस आई थिंक आई कैन मेक दैट? नो। तो जब तक आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आप नहीं बोल सकते कि यार मेरा ये एसेट है, ठीक है। चौथी चीज है एबिलिटी टू यूज और सेल। जब जैसे मैंने इंस्टाग्राम का एग्जांपल दिया, इंस्टाग्राम था, टिकटॉक है, यूट्यूब है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे जब इनिशियल फेज में होंगे, तो उस टाइम पे ही आपको मार्केट का पोटेंशियल एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या इस चीज को यूज या फिर मार्केट में आगे जाकर मैं बेच पाऊंगा अगर मैं इस चीज को बनाता हूँ। अगर कोई बिल्कुल ही वैल्यू एडिशन कर ही नहीं रहा, कोई यूजलेस चीज है, कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मार्केट की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब कोविड नहीं आया था उस टाइम पे एलएमएस प्लेटफॉर्म जितने नहीं चलते थे, आपने खुद देखा होगा, एवरीवन यूज्ड टू प्रेफर ऑफलाइन क्लासेस। लेकिन अब आप देखोगे जैसे आपकी हाइब्रिड क्लास चल रही है, देयर मस्ट बी 20 स्टूडेंट्स जो अभी यहाँ पे बैठे, 20 स्टूडेंट्स घर से बैठ के देख रहे हो। तो अब इससे क्या हो रहा है, एंड इफ एनीवन इज लेट्स से मिसिंग आउट द क्लासेस, तो आपको एलएमएस पोर्टल पे एक्सेसिबल है तो वो भी एक सॉफ्टवेयर ही, ठीक है। तो अब उस सॉफ्टवेयर को डू यू थिंक इट इज एडिंग एनी वैल्यू टू द स्टूडेंट्स, तभी बनाया गया होगा। अदरवाइज तो क्या होता है, जो क्लासेस मिस हो रही है, आपके पास कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, आप देख ही नहीं सकते थे। तो अगर आप कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हो, मार्केट में वो बिक सकता है या फिर आप उसको यूज कर सकते हो, दैट मीन्स दिस क्राइटेरिया इज मेट। नेक्स्ट इज टेक्निकली फीजिबल। अगर मैं कोई एसेट बना रही हूँ या कोई सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, तो इट शुड बी टेक्निकली फीजिबल, इट शुड बी टेक्निकली पॉसिबल, लीगली भी वो पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेट्स से मैंने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसकी जो गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं कर रही है, तो भी वो एसेट नहीं है आपके लिए, क्योंकि वो आपको कुछ फायदा तो करके देगा नहीं फिर। तो टेक्निकली वो पॉसिबल भी होना चाहिए, उसके इतने रिसोर्सेज भी अवेलेबल होना चाहिए कि आप उसको बना सकते। एंड लास्ट इज एक्सपेंडिचर रिलायबली मेजर्ड, यानी कि आप कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम लोग सिर्फ कौन सी फाइनेंशियल फिगर्स रिकॉर्ड कर पाते हैं, तो अगर आप उसको मनी टर्म्स में एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, तो हाउ विल यू रिकॉर्ड इट। सो ये 6 क्राइटेरियाज आपके मीट होने चाहिए, सिर्फ तभी आप बोलोगे मेरा एसेट है। तो नाउ कमिंग डाउन टू IAS 38 अगेन, IAS 38 के अंदर हमारे क्या आ रहे हैं, सारे इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। सो इंटेंजिबल एसेट्स एज आई वाज टॉकिंग अबाउट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। पहले तो अगर हमारे पास परचेज है तो सॉर्टेड है, जितने का परचेज करो उतने का रिकॉर्ड करो। लेकिन अगर आप खुद से बनाने का सोच रहे हो, तो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करो, रिसर्च और डेवलपमेंट। रिसर्च का मतलब ये है जहां पर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो जितना खर्चा होगा आप कहाँ डालोगे, पीएनएल के अंदर। लेकिन डेवलपमेंट स्टेज के अंदर अगर आपका ये पायरेट क्राइटेरिया मीट हो जाता है, तो आप एसेट रिकॉर्ड कर सकते हो जितना खर्चा हुआ है। लेकिन अगर पायरेट क्राइटेरिया नहीं मीट होता, तो उस पॉइंट इन टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर जितना आप लोगों का खर्चा हुआ होगा सारा का सारा पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है? नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन फॉर द सेम। बताओ, ये तो मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिखा है। कंपनी ने 1 लाख का एक सॉफ्टवेयर परचेज करा है और उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल की, ठीक है। तो अगर सॉफ्टवेयर परचेज करे, सो दैट मीन्स वेदर इट इज अ टेंजिबल एसेट और एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल है,
तो आपके अगर एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, इनटैंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट, कितने से, 100,000 से। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट 100,000 से, ठीक है, परचेज करते टाइम पे। नाउ व्हाट इज द लाइफ ऑफ द एसेट, यूजफुल लाइफ हमें गिवन है 10 years की। तो अगर मेरे पास 10 साल की लाइफ है एसेट की, सो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे, ठीक है। अब अमोर्टाइजेशन कैसे निकलेगी, 100,000 का एसेट है, डिवाइडेड बाय 10 years, तो हमारे पास कितनी आ गई, 10,000 पर एनम आ गई, दैट इज आवर अमोर्टाइजेशन। अब क्वेश्चन में पूछा है कि एसेट की वैल्यू ईयर एंड के टाइम पे कितनी होगी, तो कैन आई कॉल इट एज माई कैरिंग वैल्यू और नेटबुक वैल्यू। तो कैरिंग वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 लाख का एसेट था, 10,000 का हम लोगों ने अमोर्टाइजेशन चार्ज करा, तो 90,000 बच जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब ये 90,000 कहाँ चला जाएगा, आपका एसओएफपी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपका अमोर्टाइजेशन है, ये कहाँ पे चला जाएगा, एसओपीएल के अंदर। ओके है यहाँ तक, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, yes guys, please try solving this question before we discuss. Yes guys, done up till here, shall we discuss? The question says, S started research for preparing a software on 1st of Jan. So 1st Jan को this person started off with the research of that whether he can probably make a software or not. So अब इस stage पे, when did the stage start? First is, I'm dividing your question into two parts. First is research stage. अब ये research stage कब start हो रही है, 1st of Jan को till 30th April. अब research stage में whatever expense, whatever cost I incur, where do I post it to? Expense to SOPL, right? So at this point in time, how much cost did I incur? $40,000. So this $40,000 entirely will be expensed out to your SOPL itself, right? अब क्या हो रहा है, 1st of May को, on 1st of May, company entered into development stage. तो अब डेवलपमेंट स्टेज में एंटर होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर चीज को कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर देंगे। कब से कैपिटलाइज करते हैं, जब क्राइटेरिया मीट हो रहा है। और क्राइटेरिया मीट कब हो रहा है, 1st अगस्त को, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज पे टोटल कॉस्ट कितनी इनकर हुई है, 80,000। तो यहाँ पर आई थिंक पॉइंट्स में आ गया होगा, 80,000 की आपकी कॉस्ट इनकर हुई है, राइट। एंड हाउ मेनी मंथ्स आर अवेलेबल, डेवलपमेंट स्टेज टोटल कितने टाइम की है, टोटल 7 months की है डेवलपमेंट स्टेज। तो हमारे पास अगर मैं टोटल, मेरे पास 80,000 का खर्चा हो रहा है, तो इफ आई वांट ऑन अ मंथली बेसिस कितनी आ जाएगी, 80,000 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ रहा है, 11,428 अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो अब 1st May से 1st August तक, सिंस द क्राइटेरिया वाज नॉट मेट, 1st May से 1st August तक, सिंस द क्राइटेरिया वाज नॉट मेट, तो आपकी जितना भी खर्चा होगा, कितने मंथ हो गए, मई जून जुलाई, 3 महीने हो गए।
तो ये जो 3 महीने का होगा वो भी वापस से क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। कहाँ पे? पीएनएल के अंदर। तो क्राइटेरिया कब मीट हो रहा है? 1 अगस्त को। तो हमारे पास 80,000 की टोटल कॉस्ट थी, 7 महीने की जो गिवन थी हमें क्वेश्चन के अंदर। कितने मंथ्स है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 4 मंथ्स द क्राइटेरिया हैज बीन मेट और एसेट को बनाने के लिए हमें लग रहे थे, राइट? तो 4 मंथ्स का हमारे पास कितना आ जाएगा? 80,000 डिवाइड बाय 7 into 4। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 45,714 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा किधर चला जाएगा? एज एन इनटैंजिबल एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा एसओएफपी के अंदर। ठीक है जी, यही ट्रीटमेंट होता है हमारा बुक्स के अंदर। ऑल ऑफ यू अग्रीज अप टिल हियर? एनी डाउट? तो अभी तक इफ आई प्रिपेयर एसओपीएल एंड एसओएफपी एक्सट्रैक्ट फॉर यू, तो 40,000 हमारा जा चुका है और डेवलपमेंट स्टेज का ये वाला अमाउंट पीएनएल के अंदर जा चुका है। अब एक और चीज जो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ये हमारा 30 नवंबर को एसेट क्या हो रहा है? 30 नवंबर को asset is, let's start the question from the scratch. When is our year starting? 1st of Jan, right? Now from 1st of Jan till 31st of December, I have my current year, right? अब आप लोग देखोगे फर्स्ट चीज जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 1st of Jan से my research stage is starting. ठीक है। सो रिसर्च स्टेज हमारी 1st of Jan से चल रही है। Till what time period is it continuing? Till 30th of April, राइट? सो 1st Jan से लेके 30th of April तक आपकी रिसर्च स्टेज चल रही है। सो नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे पास कितने मंथ हो गए? जान की बात करते हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हो गए। सो दीज 4 मंथ्स वट एवर कॉस्ट यू वुड हैव इनकर्ड, ये सारी की सारी हमारी कहाँ पे जाएगी? सिंस ये रिसर्च स्टेज पे है तो जितना भी खर्चा होगा आपका पीएनएल के अंदर चला जाएगा। इज दिस मेकिंग सेंस टू यू ऑल? यहाँ तक ओके है? नाउ व्हाट इज द कॉस्ट दैट आई एम इनकरिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम? 40,000 की। तो ये 40,000 पूरा का पूरा 1st of Jan से लेके 30th of April तक जितना भी आपका खर्चा हुआ है वो कहाँ कहाँ चला जाएगा? पीएनएल के अंदर। ठीक है जी। अब 30th of April को मेरी रिसर्च स्टेज जो है खत्म हो गई। सो दैट मीन्स अब यहां से हमारी कौन सी स्टेज स्टार्ट हुई होगी? डेवलपमेंट स्टेज। अब जब आपकी डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हुई तो उस पॉइंट इन टाइम पे हमें देखना है कि हमारा क्राइटेरिया मीट कब हो रहा है। तो व्हेन इज द क्राइटेरिया मीटिंग? 1st of August को। तो यानी कि 30 अप्रैल से 1 अगस्त तक हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं है। अग्रीड? सो 30th April से 1st August तक कितना टाइम पीरियड है? मई, जून, जुलाई। इट इज 3 months टाइम पीरियड, राइट? एंड 1st of August को when my criteria has been met, तो 1st of August से आपको कितना टाइम लग रहा है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, हमें ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जिस टाइम तक आपका डेवलपमेंट मतलब प्रोजेक्ट जो है चल रहा है, जिस टाइम तक आपका एसेट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम लोग कुछ अमोर्टाइजेशन वगैरह तो चार्ज करते नहीं, उसके बाद से होता है, राइट? सो व्हेन डिड वी मीट द क्राइटेरिया? 1st August। और कंप्लीट कब हो रहा है हमारे एसेट की कंस्ट्रक्शन? 30th of November। इतनी बात समझ आई आप लोगों को टाइमलाइन की? सो 1st Jan टिल 30th of April हम लोग कौन सी स्टेज में है? रिसर्च स्टेज में। 30th April से 1st of August नेक्स्ट हम लोग किस में एंटर कर रहे हैं? डेवलपमेंट स्टेज पे। ठीक है। देन 1st of August को हमने क्राइटेरिया मीट करा। कब तक चल रहा है? 30th of November तक। यहां तक ओके आप लोगों को? अब 30th of November को आपका कंप्लीट हो चुका है, तो यानी कि इस टाइम के बाद हमारा एसेट जो है वुड बी अवेलेबल फॉर यूज। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? इज दिस ओके टू यू ऑल? नाउ
इन माई डेवलपमेंट स्टेज टोटल खर्चा कितना हुआ है 30 अप्रैल से 30 नवंबर तक टोटल खर्चा कितना का हुआ 80,000 का. दिस 80,000 एक्सपेंस दैट आई हैव डन इज फॉर हाउ मेनी मंथ्स 30 अप्रैल से 30 नवंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं 7 मंथ्स. तो यानी कि पर मंथ कितना निकल जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 7. करेक्ट. तो पर मंथ इतना आ गया. ये बात समझ आई आप लोगों को. व्हाट हैव आई डन इज टोटल जो है डेवलपमेंट स्टेज पे 80,000 का खर्चा हुआ 7 महीने के लिए. ठीक है. तो यानी कि पर मंथ हमारे पास इतने का खर्चा आ गया. राइट. अब नेक्स्ट चीज जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है विच सेज 30 अप्रैल से 30 नवंबर तक तो हमारे पास पर मंथ इतने का तो खर्चा हो रहा है नो डाउट. बट जस्ट सेकेंड सॉरी बट डेवलपमेंट स्टेज 30 अप्रैल से 1 अगस्त तक क्या क्राइटेरिया मेट था. क्राइटेरिया मीट कब हो रहा है 1 अगस्त को. तो क्राइटेरिया अगर हमारा 1 अगस्त को मीट हो रहा है तो उससे पहले डेवलपमेंट स्टेज में होने के बाद भी हमारा क्राइटेरिया मीट नहीं था. और जब क्राइटेरिया मीट ही नहीं है तो हमारा सारा का सारा जितना भी आप लोग अमाउंट स्पेंड करोगे वो किधर जाएगा. सो आई वाज सेइंग व्हेन इट कम्स टू योर intangible assets what you need to do over here is you need to classify your asset into two stages. One will be research stage and the second stage that I have over here would be development phase. Okay. Research stage means where we are only acquiring the knowledge. I am not sure whether my project will be completed here or not. So at this point in time, whatever money the company will be spending will simply be charged to your SOPA. Okay. So in this particular question, my year was starting on which date? 1st of Jan. And when is my year ending? 31st of December. So this is a number line or a timeline which I have prepared. Okay. Now the question said from 1st of Jan, the company has started preparing its software and the person incurred 40,000 until 30th of April 2024. And after this date, we have entered into development stage. So whatever cost that will be incurred in the research stage, since it is charged to SOPL, what was the cost that we have incurred for these 4 months? It was 40,000. So these 40,000 will simply be posted to your profit and loss statement. Okay, or your income statement. From 1st of May, we have entered into which stage? Development stage. Now, once we enter into development stage, we have to see whether the criteria which we have studied above, that is the pirate criteria, whether we have met the same or not. Here, since I have met the criteria on which date? On 1st of August. So that means whatever money that I would have spent until 1st of August will be expensed out to my profit and loss. So from 1st of May till 1st of August, how many months are there? May, June and July. That means 3 months are there. Correct. And for these 3 months, the criteria was not met. And when the criteria is not met, what do? We again charge the entire cost to your SOPL, that is your income statement. Okay. Now, from 1st of August till 30th of November, your criteria was met. So now once the criteria is met, everything will be posted as an intangible asset in your SOFP. Under the development stage, I simply mean once we have acquired all the knowledge, once we are sure about that, okay, that we do have an intention to complete, I have the resources available, I can measure the cost reliably, even even I am sure about that I will be receiving some economic benefit in future. Once all of these criteria are met, I'm sure about that. Let's take an example here. Let's say I said I'm going to prepare a software. Okay. Now that once I'm sure about it, I've acquired all the knowledge. Once all these criteria are met, then in that case, what are we going to do? We simply classify it as an intangible asset in the books. But if any of these criteria
is not met. Let's say I do not have the resources to prepare the software, or technically it is not feasible for me to prepare the software, or I cannot measure the cost reliably. If any of these is not met, then in that case, whatever money that you have spent on building that particular software, everything will be expensed out. But once these criterias are met, then in that case, whatever money that you are spending from now onwards is going to be capitalized. That means it will be recorded as an asset in the books. Is this making sense to you up till here? So now, from where we were at this part. So now, from 1st of August, since the criteria is met, so from this date onwards, whatever cost the company would have spent, the company is spending 11,429 per month at the development stage. So when the criteria is not met, that means for 3 months, how much is it going to be? 11,000 multiplied by 3, it is going to be approximately 34,285 at the development stage where the criteria was not met. So this entire cost will be posted to where? This will come to your SOPL. That means will be charged to your income statement itself. Once the criteria is met, how many months are there? From 1st of August till 30th of November. 4 months. Now for these 4 months, since the criteria was met, whatever cost the company would have spent, 11,429 was for 1 month. For 4 months, it is going to be 45,714. Whatever cost the company has spent will all be posted to your intangible asset. That means to your balance sheet. Now the project is completed on which date? 30th of November. So on the date of completion of your asset, once the asset is made available for use, from that date onwards, what do? We charge amortization. Why do we charge amortization? Because with time, the value of my asset is going to fall. There is going to be wear and tear. So we are going to charge amortization for the same. So what was the value of my asset? 45,714. And what was the life of my asset? 5 years. So that means this 9142 is per annum, right? But if you would see, when was the asset available for use? 30th of November. And why? When is my year ending? 31st of December. So that means only for 1 month the asset was available for use. So this amortization, which I'm going to charge, will only be there for 1 month itself. So now amortization, which we have to post to our profit and loss statement, is going to be 9143 multiplied by 1 divided by 12. That means only for 1 month I would require the same, which is going to be 761. Is this making sense to you all? Okay, under amortization, what I have done over here is my asset is worth 45,714, right? Once the asset is available for use, that means you've completed the asset, you have launched it in the market. So now with time, the value of my asset is going to fall down, correct? Under tangible assets, the way we used to charge depreciation, same way I'm going to charge amortization in terms of my intangible assets. That means those assets which do not have a physical existence, right? So now from 30th of November, my asset was completed and made available for use. So for 1 month, from 30th of November till my year end date, I am going to use the asset, right? And if I'm going to use the asset, I need to charge amortization, correct? My asset is worth 45,714. So how do we charge amortization? Just a second. Cost of the asset cost minus scrap value divided by life it is. So what is the cost of the asset? What is the value of the asset? It was 45,714, right? Scrap value was not given to us in the question, so we'll assume it as 0, divided by life, which was 5 years. So I have got per annum 9143 as my amortization charge. But I am using the asset only for 1 month. So that means I will multiply it with the number of months and
So in that case, the amortization charge, that means what am I going to post as an expense in my profit and loss statement is going to be 762 in here. Okay, up till here, is this making sense to you guys? Okay, so now if I just prepare a PNL and an SOFP extract, so in PNL, what all are we going to post? First thing would be the research expenses. And what was the amount of research expense? 40,000. Second thing that I'm going to post over here would be development stage. So development stage when the criteria was not met. So those development expenses would be posted in here, which is going to be 34 to 86. Next thing is going to be amortization, which is 762. So these are all the postings which we are going to have in our income statement. Then we have to post for the balance sheet. Here we are going to post for the intangible asset. Okay. So now what was the value of your intangible asset? It was 45,714 minus the amortization which we have charged. So at the year end, what is the value? 44,952. This is how you need to prepare your PNL and SOF. Up till here, is this okay to you all? Sure. Now let me come down to your life of the asset. Now, in terms of your intangible asset, if the life is given to you, if you can estimate the life of the asset, then it is known as finite life. Finite life means where you can calculate the useful life of the asset whenever there is a finite life. That means you know what is the useful life. With time, what are you going to do? You are going to charge amortization in that case. But there are some assets which do not really have a life. For example, in your tangible assets, you have done this thing. Land do not depreciate. Why? Because it has an infinite life. Similarly, goodwill. We do not know the life of the goodwill, and we can never know that. So in that case, what will I call it as? Infinite life. So if the life of the asset cannot be estimated, then in that case, there will not be any amortization that will be charged. But it is mandatory to do an impairment review annually. So I'll repeat it here. What did I say? Whenever it comes to the life of, if it is, then in that case, you will simply charge amortization based on whatever is the useful life given to you. Okay. But if the life is infinite, that means there is no useful life of the asset. The asset is going to continue in the future, like, but we do not have, or we cannot estimate the life of the asset. For example, for goodwill, then in that case, there will be no amortization that will be charged. But in that case, every year, I would need to see that if there is any impairment on that particular asset or not. What do we mean by impairment? I am simply going to see whether due to any hint or any condition that existed during the year, is there a fall in the value of my asset? For example, remember in IAS 36, when we were doing for CGU, I was also charging the impairment to the goodwill also. Same way, if there is an infinite life of the asset, what are we going to do? We will not be charging any amortization, but every year I will see if there is any reduction in the value. Let's say there is any internal or external factor due to which the value of my asset has fallen down, then in that case, impairment would be charged. If there is no impairment, we will still show the asset at the same price itself. Okay. Now the last part of this standard, before I give you guys a break also, and we'll be done with this accounting standard also, which is measurement model. Do you guys remember
the measurement models that we did in the tangible assets, what were those? Cost and revaluation model. Same thing we are going to follow here also. We are going to have two models. First is the cost model itself. Under cost model, what do? We record the asset at its cost itself, and we deduct any amortization which is given to us. That means whatever would be the life of the asset, I will amortize my asset on that basis, right? So first measurement model that we have over here is cost model. So cost model ke andar what do? We are going to record the asset simply at its cost, and every year I'm going to charge amortization based on the life of the asset. But when it comes to revaluation model, what was revaluation model? Revaluation model simply meant that we are going to record the asset at its fair value, or I can simply call it as market price. Do you think intangible? Okay, first of all, how do we calculate the fair value or the market price of an asset? How do I know what is the market price of something? That means market may those assets would be available, right? For intangible asset, it can also be like, or majority of the times, intangible assets are unique. So how will you know what is the market price? For tangible assets, for example, if I'm saying I want to look at the price of the property, what will I do? I will simply go and inquire with the property dealer, and I'll get to know what are the prices of the similar property, and I will know what is the fair value of my property. I can estimate that, right? But when it comes to intangible assets, your intangible assets are unique. In most of the cases, they are. So if the intangible asset is unique, how will you calculate, or how will you get to know what is the market price of your asset? So when it comes to revaluation model, we can hardly use this model in our intangible assets because there is no active market. Since there is no active market, I'm not saying revaluation model you cannot use it. You can, if there is a similar product available in the market. The chances of the same is very unlikely. I'll give you an example where active market is available for your intangible asset also. For example, license. You all get your driving license and everything, right? Or maybe a sailing license if you are a sailor or something. So now that license that you are getting has a life also. You are paying for that particular intangible asset also. And at the same time, everyone else who is going to get that driving license or a sailing license will pay the same amount only. Or if the amount also changes, you will get to know what is the market price of that. So if there is any similar product which is available in the market, which has an active market means there is daily buying and selling which is happening, then in that case you can still use revaluation model. But in majority of the cases, I would say 95% of the cases, there is no active market, so we will always use cost model. Cost model will be more relevant in terms of your intangible assets. But if there is any active market, you can still use revaluation. Okay. So what did we learn up till here? Your IAS 38 was a very tiny standard, to be honest. First thing that we did was intangible asset means those assets which do not have a physical existence. Then we divided this standard into two parts, purchased and self-generated. Purchased means if I am going and purchasing the asset from the market, I will record the asset at that particular price itself. That means at the cost itself. Then if it is self-generated, that means I myself is manufacturing or producing that particular intangible assets. Then in that case, your intangible asset will be divided into two stages. First is research, where you are only acquiring knowledge. Whatever money spent at this stage will be expensed out. Then we will enter into development stage. If the criteria is not met, you will expense it. If the criteria is met, you will record it as an asset. Then we did the life of the asset. If the life of the asset is finite, that means you can estimate the useful life of the asset.
then in that case you are going to charge amortization. But if you cannot estimate the useful life of the asset, that means there will be no amortization that we are going to charge. That means what are we supposed to do over here? We will do an impairment review annually just to see if there is any change in the value of my intangible asset. Okay. And the last thing, measurement model. There are two types of models that we used. First is cost and second is revaluation. Cost means whatever price that you would have purchased your asset at, you will record it at that price and you will charge amortization on that price itself. But if we are using revaluation model, that means we are recording the asset at its market price. That is only and only possible if there is an active market. And if there is no active market, then in that case, we will not be using revaluation. Is this making sense to you all up till here? Any doubts, guys? And with this, we are done with our intangible assets. All right, guys, I hope you did enjoy the session. And if you did, please make sure to subscribe to my channel. And I will be posting the test too very soon. So please make sure you join the WhatsApp community. The link for the same would be in the description box below. Until then, please take care of yourself. Bye bye.